हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग जा रहे हैं एम्बेसी में दिवाली का कुछ प्रोग्राम है। वहाँ पे उन्होंने रामायण पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम रखा है, तो अभी वहाँ चल के पता चलेगा कि होगा क्या प्रोग्राम। तो अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार और हम लोग जा रहे हैं एम्बेसी के लिए। और हमने पूरा फेस्टिव ड्रेस पहन लिया है। वी ऑल आर गिविंग द फेस्टिव वाइब, सो लेट्स गो। लुकिंग लाइक बदमाश बदमाश कंपनी। हियर इज द कार आ गई है। अभी हम लोग पारी करने जा रहे हैं। चलो ओके, लेट्स गो। वी आर ऑन आवर वे टू इंडियन एम्बेसी फॉर द दिवाली पार्टी और अच्छा खाना और रामायण करने जा रहे हैं। एंड बेसिकली वी आर ओनली गोइंग फॉर द खाना। खाने के लिए जा रहा है। खाना इज एवरीथिंग हियर इन चाइना। एम्बेसी जा रहे खाने, वो भी खाते हुए एटलीस्ट। और सबसे पहले मीठा खा रहे हैं। मीठा खा के निकले। हम लोग इतना लेट तो एम्बेसी पहुंचने के बाद हमें ये बुक दिया गया जिसमें था कि कब क्या प्रोग्राम होना है, और ये दिया गया था ट्रांसलेटर जिसके हेल्प से हम लोग चाइनीज़ जो भी कुछ भी बोल रहा था तो वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुन सकते थे। हमें इंग्लिश में सुनाई दे रहा था। सो बेसिकली दे वर ट्राइंग टू टेल अस कि चाइना में भी एक नॉवल है जिसकी स्टोरी रामायणा से मिलती है, जिसके कैरेक्टर्स और उसकी स्टोरी का जो मेन मोटिव है कि सत्य का असत्य पे विजय, ऐसी कुछ है कि स्टोरी एक नॉवल जो चाइना में भी है। तो दे वर टॉकिंग अबाउट द रिजेम्बलेंस विद रामायणा। Was walked out of the circle when he was kidnapped by monsters. So these details remind us of the similar stories in the Ramayana. We can make a detailed comparative study of the details between the novel and the epic. Since that the Chinese version is there, that quite a number of scholars have not studied Sanskrit. Professor Jin Kamu with Peking University, a Sanskrit scholar, wrote a very long introduction entitled Ramayana, a Greek epic from India. In this way, Ramayana began to be known by more people in China. We cannot neglect their contribution. The influence of Indian epic Ramayana or the Chinese Indologists. The outline. Wow. So if you look at it in a very simple sense, you can say the good triumphs over evil, which generally creates a good feeling. If any one of you have seen Bollywood cinema, that's always, we know the end even before we watch the movie, because eventually it has to be a good ending. Let it propagate, and at times also propagate it, because it's a natural way of bringing discipline in the society. Because if people can be disciplined from within, you really don't have to spend so much money on police and things like that. So that must have also helped the idea of Ramayana be promoted by the sanction of the Ramayana story has become so influential in the world, I would say, or at least in the Southeast Asian region. In Thailand, we have a different name for Ramayana. And he is the ambassador of Thailand, and he was talking about कि थाईलैंड में भी इनका जो नॉवल है उसकी रिजेम्बलेंस रामायणा से बहुत ज़्यादा है, और उनके हीरोज़ का कैरेक्टर रामायण से बहुत ज़्यादा मैच करता है, और काफ़ी अंश थाईलैंड में रामायण के हैं। Our politics and our monarchy, I think our familiar figures of Hanuman and other characters. I'm not an expert, but one of those
old story of Ramayana stories, and you can understand by looking at these paintings since the beginning of Ramayana story. So I encourage everyone who haven't been there and you find time in Thailand to visit the Royal Palace and the Emerald. This is our depiction or our interpretation of how these characters look like in our culture. Of course, and I'm Ravana. And a more exciting one is the Hanuman. The costumes and the mask, like a headgear, looks more like a helmet in a way. But players who wear this and dance, a drama, we call it a mass drama, which is very common in Thailand and also in other countries in the region as well, like in Cambodia, in Myanmar, in Laos. So we kind of share this culture but here. And I also again encourage everyone who haven't been to, it was kind of like a foreign influence, but of the good over the evil. But I think the importance of is one of the Indian central to Indian culture, and of course deeply rooted in the Indonesian heritage. Now this is a story of love, sacrifice. और ये सब लोगों का ये कहना था कि अगर आप कभी थाईलैंड या इंडोनेशिया कभी विजिट करो तो आप ऐसी जगहों पे ज़रूर जाना जहाँ आपको रामायण से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी. And in the late 18th century renaissance of literature at the central Japanese courts of Surakarta and Yogyakarta saw the rewriting of the Ramayana. Maybe to invite me here for this presentation, and I would like to extend my gratitude to all. The objective of this presentation is like the visual expressions of the Ramayana, which traces the several dynamics and interpretations and representations that constitute the multiplicity of the Ram Katha. But in the regional context, as I said, like for example, the Kirtibas Ramayan is quite popular in Odisha. Then we have the Mithilabhas. Such copies of the text also existed, and then they were disseminated to various parts. Then his own commander, Abdul Rahim Khan, Republic of Indonesia, Mr. Palulian Silahi. और बीच में 2 से 3 बार का हमें मिला था ये ब्रेक टाइम, जिसमें टी और कुछ स्नैक्स वगैरह थे. सो इट वाज फॉर द रिफ्रेशमेंट. ब्रेक टाइम. सो शी इज़ ऑल्सो अ रिसर्चर, और उन्होंने बताया कि चाइना के चुआनजो एक जगह है जहाँ पे राम जी के फुटप्रिंट्स मिले हैं. And the passage of Tian Horse in ancient books, Chinese ancient books. And I did a French dynasty and Yuan dynasty live in Quanzhou. और एंशियंट टाइम में चाइना में इंडिया के कुछ साउथ इंडिया के मर्चेंट गए थे, तो इसीलिए चाइना में साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होता है. वहाँ की मूर्तियाँ मिलती हैं, वहाँ के गॉड मिलते हैं. तो चाइना में साउथ इंडिया से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और उनकी ज़्यादा कल्चर वहाँ पाया जाता है. From South India is a goddess as well, exactly the same. In the Yongchun County, you can use the Yuanfengsi, the Buddhist temple. We celebrate that. और रामायण का चाइनीज़ में भी ट्रांसलेशन किया गया है, जिसका नाम चीन रामायण लिखा गया, और इसकी हेल्प से उन लोगों को रामायण के बारे में समझने में और ज़्यादा मदद मिलती है. 向台为发言嘉宾颁奖并表示祝贺。
फिर कुछ कल्चरल डांस की सहायता से रामायण को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई और कुछ कलाकारों ने इसे एक्सप्रेस किया एंड इट वाज रियली जस्ट ग्रेट. हनुमान, लक्ष्मण,哦，哈努曼，请你去告诉西大，我。我们还要饰演拉什玛，拉什玛是一个非常勇敢的一个战士。The Indian food. What's your name? My name is Lele. Okay, and 你刚刚告诉过了你是 I just returned back to China last year. I completed my MA and PhD in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. and you specialize in Buddhist studies, you said? Yes. मोस्ट स्पेशल थिंग फॉर अस. अभी हम खाना खाने आ गए जो हमें चाहिए था. खाओ तो आए ही थे. प्लेट उठाओ खाओ. खा लो. लग रहा है. हम यूपी वाले, हमारा हैप्पी आवर्स. मुझे जलेबी मिली. जलेबी मुझे सबसे अच्छी चीज ये. बाय बाय.